So this is basically the lecture number 6 as per our numbering, and this lecture is about claims, arbitration, litigation, escalation, indexation, depreciation, and sinking fund and valuation. In this lecture, we will discuss these miscellaneous topics, and this lecture will be the last lecture of our midterm course. Before going to the main, before going to these topics, I would like to tell you that this is just an introductory lecture to these topics, because these are these individual topic can take a whole complete lecture if we discuss it in detail. But I'll just introduce you people with these terminologies. Is it clear? Yes, sir. Okay. So the learning objectives of this lecture will be, you'll be able to explain, by the end of this lecture, you'll be able to explain what are the claims, what is arbitration, and what is litigation. You'll also be able to explain what is escalation, depreciation, what is sinking fund, what is valuation. आप लोगों ने प्रोजेक्ट इकोनॉमिक्स का कोर्स पढ़ा हुआ है, ये इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स का? No, sir. Okay, sir. So in that particular course, you'll discuss most of these items in detail. Let's say depreciation. What is depreciation? What is sinking fund? What is valuation? So you'll discuss and study these terminologies in detail in that course. I guess it is in your final semester, 8th semester. So what are claims? Claim can be anything which is requested by the contractor. This request can be for extension in the time or payment of additional cost, which is not mentioned in the contract or which is not mentioned in the BOQ, and which is something additional, and that was not known at the start of the project. So anything claimed, anything, any request from the contractor side to the client for these things, it can be called as claim. So let's read the definition here. A claim is any notification or request by the contractor for payment additional to that envisaged in the contract. This thing will not be included in the contract, and this item was not included in the contract, but it was used during the work in the field. So or you can say any time, it can be also related to the time. For example, the work was delayed due to delayed 3 months due to lockdown, due to COVID-19. So this thing was not included in the contract. So contractor can claim that I will not be able to complete the project within the agreed deadline, and the project may be delayed
3 months because of the lockdown due to COVID-19. Is it clear? आपको थोड़ा समझ आई कि what is claim? Yes, sir. Okay. So, if the owner accedes to the claim of the contractor and grants him extension of the time, अगर तो ऑनर मान जाता है कि ठीक है आपके जो क्लेम जेन्युइन है एंड he grants him extension of time or reimbursement of the additional cost, the issue will be resolved and the story will be closed. But the story begins if the owner does not agree to the claim put out by the contractor. अगर ऑनर जो है या क्लाइंट जो है वो एग्री नहीं होता कि ये आपने जो काम किया है ये जरूरी नहीं था और इसके बगैर भी काम हो सकता था तो और मैं इसकी पेमेंट नहीं करता, and the contractor thinks that it was necessary, then there is a dispute between these two parties. So dispute is something a dispute can be called as a claim or any request upon which both the parties are not agreeing. Okay, here is another definition of claims. Here they have defined like the contractor claim may be defined as a demand for payment or time, a demand for payment or time. This demand can be of the payment or this demand can be of time believed to be due, that is at least in the initial stages denied by the client. स्टार्ट में वो आपको पता नहीं था या स्टार्ट में जो था प्रोजेक्ट में इंक्लूड नहीं हुआ था and in the later stages it was included in the contract, not in the contract but it was deemed necessary for the construction or to be used. So that type of demand is can be called as claim. Sometimes when the claim is comparatively small, then mostly the contractor, when the claim is comparatively small and the client is rejecting the claim and client is saying that this is not acceptable and I will not pay you for this. So if it is not significant, then most of the contractors do not take legal action against the client for this payment because of the fear of the losing position on future bidders list. आपका जो लेट्स से अगर ये दोबारा अगर ये कोर्ट में केस कर देते हैं, लीगल एक्शन ले लेते हैं कॉन्ट्रैक्टर क्लाइंट के अगेंस्ट, तो नेक्स्ट टाइम जब क्लाइंट के पास कोई और प्रोजेक्ट आता है तो उससे उनके टर्म्स एंड कंडीशंस वहां पे खराब हो जाते हैं. तो अगर कॉन्ट्रैक्टर का क्लेम इतना नहीं है और वो समझता है कि इस पे मेरी जितनी एफर्ट लगेगी वो उससे ज्यादा हो जाएगी जितने का ये क्लेम है, तो इन दैट केस और या जो है वो अपने ताल्लुकात खराब ना करने की वजह से वो उस चीज को छोड़ देता है. बट इफ द क्लेम इज सिग्निफिकेंट और लार्ज, then they can take it into the court, and the whole process, that whole process is then called as litigation.
most of the organizations, for example, PDA, NHA, public health, they have their own standard operating procedure (SOP) for receiving and resolving the claims and disputes. So let's see an example or a sample SOP for the settlement of the dispute. This SOP is from NHA, National Highway Authority. So as per this SOP, the first step is that the claims shall be received in the operation wing of NHA. The claims will be received in the operation wing of NHA along with engineers decision or point of view. इंजीनियर का पॉइंट ऑफ व्यू उस पे लिखा होना चाहिए जो उसको प्रोजेक्ट को सुपरवाइज कर रहा है, एंड विद द रिव्यू ऑफ द सुपरवाइजरी कंसल्टेंट, एंड जो कंसल्टेंट वहां पे प्रोजेक्ट को सुपरवाइज कर रहे हैं उनका रिव्यू होना चाहिए, एंड प्रोजेक्ट डायरेक्टर और concerned official of NHA from the office of concerned general manager. So इन तीन पर्सनल्स के उसके ऊपर क्लेम के ऊपर रिव्यू होने चाहिए और वो रिव्यू फिर ऑपरेशन विंग में सबमिट कर देंगे. The concerned general manager must endorse his recommendations on the principle and quantification of the claim as submitted by the concerned PD. GM अपनी recommendations endorse करेगा उस claim के ऊपर. Okay, so when this claim is submitted to the operation wing, the operation wing will then review the whole case, and if they feel that this is something genuine, then they may refer that case to the contract section. Sorry, this is not contractor section, this is actually contract section. Now the claim is submitted to the contract section by the operation wing. Now what the contract section will do, the contract section will review the claims in the light of contract administration reports. जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उसको मद्देनजर रखते हुए वो कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन उस क्लेम को रिव्यू करेगा, एंड दे विल आल्सो आइडेंटिफाई what actions can be taken to resolve this claim or this issue. After that, they will prepare a working paper. उस पे वो लिखेंगे कि ये इशू था एंड ये इन वजह से ये आया, एंड ये इसके हमारे पास पॉसिबल एक्शंस हैं जो हम ले सकते हैं. ये तो दे विल प्रिपेयर अ रिव्यू वर्किंग पेपर फॉर द रिव्यू ऑफ फर्स्ट स्टेज कमेटी. ठीक है, अब वो वर्किंग पेपर कौन रिव्यू करेगा? फर्स्ट स्टेज कमेटी. The first stage committee shall meet and deliberate on the claims and submit its recommendation to the second stage committee. After that review on the working paper by the first stage committee, they will write their recommendations on the paper and will submit it for the second stage committee. The second stage committee shall review the whole case and submit its recommendations to the chairman, NHA. The second stage committee will submit the claim to the along with the recommendations to the chairman of NHA, and the chairman will approve the recommendations. Or if he feels that the recommended actions are not satisfactory, the chairman can
desire to review the whole case by any other form. So this is the procedure of settlement of the dispute in the NHL. Okay, the final step will be once when the claim is approved or the recommendations are approved by the chairman, the payment shall be made as per the prevailing procedures and amended from the time to time. Normally, in the subcommittee of the first stage committee, the following representatives are included. The first one is representative of contract section to be nominated by the GM contracts. Second one is the representative of accounts wing to be nominated by the GM finance. And the third one is the representative of the operation wing to be nominated by the GM operations and coordination. So first stage committee can comprise of these three personnel. Now our next topic is escalation. So what is escalation? Escalation is basically the increase in price due to inflation. What is inflation? Anyone from you? सर चेंजेस कहते हैं सर, पैसा डॉलर इंक्रीज या डिक्रीज होता है. तो महंगाई को कहते हैं. अच्छा, ठीक. इन्फ्लेशन महंगाई को कहते हैं, ठीक है. या महंगाई कब आती है? जब आपकी करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाती है. जब आपकी when the value of your currency is reduced. So if you were buying let's say 1 liter of milk in 100 rupees, now if the value of the currency is reduced, then you have to spend, let's say, 200 rupees to buy 1 liter of milk. So this is now the value of milk is same, but the value of your money is reduced, so you have to spend more money to equate it with the value of the milk. So this is something inflation. And the increase in price due to inflation is called basically escalation. Now, inflation and deflation are something generic. They can be applied to any of the items, and this is in general terms that this much inflation has been done. But when we talk about the escalation, this is something specific to a product or a set of product. Many building owners, developers, and public entities want to know what their project might cost in future. So if you're constructing a plaza in 2020, you may be interested that what will be the cost of construction of this plaza in 2040 or 2050. So cost escalation will help you in this. The cost escalation is study of providing an educated percentage to the base cost of the project estimated at today's market.
today's market value to know what is its future value might be. So what is cost escalation? Cost escalation can be defined as the changes in the cost or price of specific goods or services in a given economy over a period of time. And this is similar to the concepts of inflation and deflation, except that escalation is specific to an item or class of item, and when we talk about the inflation and deflation, they are generic words, and they cover all of the aspects or all of the products. For example, if we take the general inflation in the US from 2003 to 2007 time period, so as per the consumer price index, जिसको आप महंगाई की शरह भी कहते हैं, the steel prices, as per the consumer price index, the inflation was 5% or less than 5%, but the steel prices increased, or you can call it as escalated by over 50%. So हम जो नॉर्मली आप न्यूज़ में सुनते हैं या न्यूज़पेपर्स में देखते हैं कि महंगाई की शरह, वो जो एक वर्ड यूज करते हैं महंगाई की शरह, तो दैट इज समथिंग जेनेरिक, दैट इज इन्फ्लेशन. That is, let's say 5% in 2003 to 2007. But अगर हम किसी एक स्पेशल आइटम की बात करें, एक स्पेसिफिक आइटम की बात करें, then the correct terminology will be escalation. So the prices of the steel were escalated by over 50%. Prices जो स्टील की प्राइसेस हैं वो 50% जो है वो इंक्रीज कर गई. सो ये जो है, ये वैल्यू जो है एक एवरेज सेंस में होती है कि एक पूरे मुल्क में एक एवरेज चीज, ऑन एवरेज चीजें कितनी महंगी हुई हैं. और जो एस्केलेशन है, दैट इज समथिंग रेलेवेंट टू सम स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सम स्पेसिफिक आइटम. I hope the difference between the inflation and escalation is clear to you people. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now cost escalation, as this is understood that if the prices of any item which are used in the construction, the prices are increased, then there will be cost overrun. And now what is cost overrun? As you आप लोगों ने project management course नहीं पढ़ा, so let me define it in simple terms. कि अगर आपका project का cost estimated था, let's say 1 million rupees, and आपके spend हो गए 2 million rupees, तो आपका project जो है वो cost overrun में चला गया. मतलब ये कि आपके estimated cost से वो उसका cost ज़्यादा हो गया. So this is basically called as cost overrun. So in the same manner, there is another terminology which is called as time overrun. So आपका जो estimated time था, let's say 1 year था और आपका 1.5 years लग गया है, तो it means आपका project जो है time overrun में चला गया है. So these are two terminologies used and commonly used in the project management course, or not in the course but in the field of project management. Another terminology before which should be defined before discussing it is cost contingency. Escalation तो मैंने आपको बता दिया है. Now what is cost contingency or what is contingency? So contingency are those items which cannot be
estimated. For example, if you are preparing an estimate, or if you're preparing a cost estimate or material estimate, or you are carrying out the quantity survey for a construction project, and you are estimating the quantity of excavation required, quantity of brickwork required, quantity of cement required, or quantity of steel required for the project. So you can easily determine how much steel or how much excavation will be required in this project. But if I ask you about how much binding wire will be needed in this project, how much scotch tape will be required in this project, or you can say how many nails will be required, how many nails will be required for this project. So these things are very difficult to estimate. और इन चीजों लेकिन इन ये एस्टिमेट करना इनका थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और दूसरा ये कि इनका तो कॉस्ट कुछ ना कुछ होगा. इसी तरह की बाकी जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर जनरेटर लगाया हुआ है तो जनरेटर का पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल लाने तो पेट्रोल का भी कुछ ना कुछ खर्चा होगा. तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो आप एस्टिमेट नहीं कर सकते. जो आप एस्टिमेट नहीं कर सकते तो उनको आप कंटिजेंसी में डाल देते हैं. अब कंटिजेंसी को आप एस्टिमेट कैसे करते हैं? आप कहते हैं कि लेट्स से आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो है वो 100 रुपीज है. आपने कॉस्ट एस्टिमेट कर लिया कि इतना, सॉरी अपनी क्वांटिटी एस्टिमेट कर ली, फिर जो है उसके बाद कॉस्ट एस्टिमेट कर लिया, और आपका टोटल कॉस्ट जो प्रोजेक्ट आ रहा है इंक्लूडिंग दी कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन, कॉस्ट ऑफ कंक्रीटिंग, कॉस्ट ऑफ ब्रिक वर्क एक्सेट्रा, जो मेन आइटम्स हैं उनका कॉस्ट आपने कैलकुलेट कर एस्टिमेट कर दिया, एंड यू एडेड अप ऑल ऑफ दीज कॉस्ट. तो जो आपके पास टोटल कॉस्ट आएगा तो उसकी आप एक परसेंटेज ले लेंगे. मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नॉर्मली 2% to 5%. तो आप कहते हैं कि 3% ऑफ दिस कॉस्ट विल बी कंटिजेंसी. तो अगर 100 रुपीज आपका टोटल कॉस्ट आया है तो 100 का 3%, लेट्स से मैं कहता हूँ कंटिजेंसी है, 3% कितना हो गया? 3 रुपीज. तो आपके प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट जो होगा 103 रुपीज होगा, नॉट 100 रुपीज होगा. आपने 3 रुपीज कंटिजेंसी के भी ऐड कर लिए. इसी तरह अगर आपका 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो आप इसमें 3% या 2% कंटिजेंसी ऐड कर देंगे तो वो 1 करोड़ 3 लाख हो जाएगा. So this is something contingency. So normally the escalation and contingency are mostly referred as the risk fund because they are on the risk. क्योंकि इनकी एस्टिमेशन आपको पता नहीं लगता कि ये कितना हो सकता है कि आपका जो एस्टिमेट था या परसेंटेज थी उसमें ये कंप्लीट हो जाए, लेकिन हो सकता है कि ये इससे ज्यादा कॉस्ट कर लें. तो दे आर नॉर्मली कंसिडर्ड एज रिस्क फंड्स एंड दे शुड बी इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट एस्टिमेट एंड बजट. And when escalation is minimal, it is sometimes estimated with the contingency, but it is normally when it is significant. When it is in significant amount, then it is estimated or included separately from the contingency. Here is an example of escalation submitted for approval. For example, these are the serial numbers. This is the date of tender in which tender was advertised or the project was awarded or tender process was done. Month of billing. Now this is the project is undergoing and the contractor is submitting his bills every month. For example, at the January 2012, the quantity was this much cement per unit
bag for this quantity was this much. Total cement bags consumed were this much, 537.1. Now, when the contractor or when the contract was signed or when the tender process was completed, at that date, the price of one cement bag was 385 rupees. But now, when the work was being done, which is January 2012, and the tendering was done in 6th month of 2011. So when the work was done, so the price of the cement bag was 420 rupees. Now the price of cement bag has been increased. What is the difference in the how much amount is increased for each cement bag? So this is 35, 420 minus 385, this is 35. Percentage difference, this is this can be obtained by 420 minus 385 divided by 420 multiplied by 100. So this you'll get the difference in percentage and multiply difference in rate, which is 35, multiplied by total number of bags, 537. You will get the escalation amount. So this much amount should be paid extra for the bill of January 2012. Similarly, for the bill in February 2012, the rate of cement bag was 426 rupees, and the at the time of tendering it was 385 rupees. And the total cement bags consumed in this month are this much. Difference is this much, 41 rupees, and 41 multiplied by total cement bags consumed, this is 77,074 rupees. Similarly, you can calculate it for rest of the months as well, and the total amount is for escalation is 3,65,365 rupees. So this much amount should be paid additional to the bill which we have claimed. Excuse me, sir. Yes. सर ये escalation amount जरा दोबारा explain करें सर, ये किस तरह calculate किए सर? Okay. Please recall the previous lectures in which we have discussed that at the time of submitting the bids, you will propose your rates at which you will complete the work. For example, आपने bidding के दौरान आपने कहा था कि मैं concreting जो है इतने रुपीस पर क्यूबिक फीट या पर क्यूबिक मीटर में करके दूंगा आपको. अब वो जो आपने रेट दिया था वो आपके माइंड में ये था कि सीमेंट जो है उस टाइम जो था सीमेंट जो था 420 रुपीस या चले 385 रुपीस पर बैग था. तो वो आपने ये चीज माइंड में रखते हुए आपने कहा था कि मैं इतने रुपीस में करके दूंगा एट द टाइम ऑफ टेंडर. बट जब आपने काम शुरू किया, टेंडर प्रोसेस हुआ और प्रोजेक्ट जब तक स्टार्ट हुआ तो साल गुजर चुका था या 1.5 साल गुजर चुका था, 2 साल गुजरा है. तो जब काम आपने स्टार्ट किया तो आप जो सीमेंट बैग है आपको 420 रुपीस का है, पहले 385 रुपीस का था, 420 रुपीस का. यहाँ पे आपने डेट लिख दी है, डेट ऑफ टेंडर क्या थी और आप किस मंथ में काम कर रहे हैं, ये वो मंथ है, मंथ ऑफ बिलिंग. ठीक है, किस मंथ का बिल है. अब क्वांटिटी कितनी यूज हुई है, दिस मच, और इसमें सीमेंट बैग्स कितने थे पर यूनिट, तो 0.481. So this is not important. The important is the total cement bags consumed. The total cement bags consumed are 537.1. अब पहले जो रेट था वो 385 रुपीस पर सीमेंट बैग था, अब जो है 420 रुपीस पर सीमेंट बैग है. आपने जो रेट दिया था कि मैं आपको इतने रुपीस में पर क्यूबिक फुट कंप्लीट करके दूंगा, तो
तो दैट वाज बेस्ड ऑन 385 रुपीज। तो ये चीज तो आप अपने 385 रुपीज के हिसाब से क्लेम कर दें, लेकिन आपका जो एडिशनल कॉस्ट आया है ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सीमेंट बैग, that is additional cost is 35 rupees because 420 minus 385 is 35. This much price has been increased. So itna cost 35 rupees per cement bag आपका extra लग रहा है। तो 35 rupees multiplied by total number of cement bags consumed will give you 18,799 rupees. सिमिलरली जब आप फरवरी में करेंगे तो आपके सीमेंट फरवरी में आपका सीमेंट बैग की प्राइस थी 426 रुपीज और इतने सीमेंट बैग्स कंज्यूम हुए थे, तो आपका डिफरेंस जो है वो इतना 41 रुपीज आ रहा है। जो प्राइस एट द टाइम ऑफ टेंडर थी और जो प्राइस एट द टाइम ऑफ बिलिंग 426 है, तो डिफरेंस जो है 41 रुपीज है। 41 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स कंज्यूम एंड यू विल गेट द एस्केलेशन अमाउंट। Is it clear now? Yes, sir. Okay. So it was the simplest way of calculating the escalation amount. Now some of the departments give their own formula for calculating the escalation amount. I will not go into detail, and I'll just show you the procedure. एग्जाम्पल सी सैंपल कैलकुलेशन देख लेते हैं यहाँ पे। तो लेट्स से द फॉर्मूला फॉर प्राइस एडजस्टमेंट इज Pn is equal to A. Pn is called as एडजस्टमेंट फैक्टर। सो इससे आप एडजस्टमेंट फैक्टर निकाल लेते हैं 1 point something, 1.026, 1.028, 1.033, 1.039, 1.038. दिस इज फॉर ईच मंथ। अब इस एडजस्टमेंट फैक्टर को आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं ओरिजिनल कॉस्ट के साथ, तो वो आपको एडजस्टेड प्राइस बता देता है। ठीक है, अब ये प्राइस एडजस्टमेंट फैक्टर आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? यू कैन यूज दिस फॉर्मूला एंड दिस इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। दिस विल इन्वॉल्व द लेबर वेट फॉर द चेंज इन द लेबर कॉस्ट, weightage for the change in the diesel cost, weightage for the change in the bitumen cost, weightage for the cement cost, change in the cement cost, and weightage for the change in the steel cost. ठीक है, तो ये सारी आपको वेटेज दी हुई है कि इस मंथ में इतने परसेंट ये चेंजेस, ये चीजें चेंज हुई है इनकी प्राइसेस। तो ये जो A, B, C, D ये लिखें, ये सारी आपकी वेटेजेस है। नाउ व्हाट इज Ln by L0? दिस इज द रेशियो ऑफ करंट रेट्स एंड बेसिक रेट्स। जो आपके मौजूदा रेट है और जो आपका रेट एट द टाइम ऑफ टेंडर था उसका रेशियो। सो Ln डिवाइड बाय L0 फॉर द लेबर, डीजल के लिए Dn डिवाइड बाय D0, Mn के लिए सॉरी अब Mn भी कोई ना कोई आइटम होगा इसमें, तो उसके लिए Mn लिखा हुआ है यहाँ पर, एंड सो ऑन। तो इस तरह का फॉर्मूला है एंड यू पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला एंड यू गेट एडजस्टमेंट फैक्टर फॉर ईच मंथ। नाउ यू कैन मल्टीप्लाई दिस एडजस्टमेंट फैक्टर विद द ओरिजिनल कॉस्ट एंड यू विल गेट द एडजस्ट प्राइस आफ्टर एस्केलेशन, या एस्केलेशन अमाउंट आपके पास मिल जाएगी। Now let's go through the definition of the indexation. What is indexation? Indexation is basically the efforts which are made by the governments to maintain the purchasing power of their of the public. For example, वक्त के साथ साथ आपकी करेंसी की वैल्यू डाउन हो रही है,
ठीक है, लेट्स से एक बंदे की सैलरी थी 20,000 रुपीज and 20,000 rupees back in 2010 it was enough for him because उस टाइम करेंसी की वैल्यू बेहतर थी। अब करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई है और अगर उसकी सैलरी वही 20,000 रुपीज है in 2020 after 10 years and the purchasing power जैसे कि करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई है तो परचेजिंग पावर उसकी कम हो गई है अब उस बंदे की जिसकी 20,000 रुपीज सैलरी थी। पहले अगर वो 20,000 रुपीज में पूरे महीने का खर्च भी चला लेता था और उसमें उसको कुछ सेविंग्स भी हो जाती थी, तो अब उसको सेविंग भी नहीं होती और उसको एडिशनल थोड़ा बहुत लोन भी लेना पड़ता है जरूरत से। अब इस चीज को परचेजिंग पावर को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट्स रेगुलरली इंक्रीज करती है अपने एम्प्लॉयज की सैलरीज को। So this process of maintaining the purchasing power of the public is basically called as indexation. So what's the definition? A system of economic control in which certain variables such as wages and interests are tied to a cost of living index, so that both rise or fall at the same. So they both rise or fall at the same time or same rate, and the detrimental effect of the inflation is theoretically eliminated. क्या चीजें एक रेट पे फॉल हो या राइज हो, आपका जो करेंसी की वैल्यू है और आपका जो वो है इंटरेस्ट रेट है। अगर आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो रहा है या आपकी 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 जो चीजों की प्राइस है वो ज्यादा हो रही है, आइटम्स की प्राइस ज्यादा हो रही है, तो उसके साथ साथ आपकी परचेसिंग पावर भी ज्यादा होनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस ज्यादा हो रही है और आपकी परचेसिंग पावर आपकी वही है, तो दिस विल कॉज पुअर्टी इन द नेशन। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए और प्राइसेस के प्रोडक्ट प्राइसेस और जो परचेजिंग पावर है वो एक दूसरे के साथ टाई अप हो गई, तो अब एक चीज ज्यादा हो रही है तो दूसरी भी ज्यादा हो रही है। तो दिस प्रोसेस इज बेसिकली कॉल्ड एज इन्फ्लेशन प्रोसेस, सॉरी इंडेक्सेशन। देन देयर इज डी इंडेक्सेशन इज एज वेल, कि अगर मुल्क के हालात अच्छे हो रहे हैं और फिर उस चीज को रिवर्स भी किया जा सकता है। So there is a benefit of indexation that when a government decides to index wages of government employees to inflation, it is to transfer the risk of inflation away from the government away from the government workers onto the government. So the risk of inflation over government पे आ जाता है. Such a policy is to attempt to reduce the inflationary expectation and in turn inflation when it is rising rapidly. अब इस चीज का एक फायदा देखें, इनकम टैक्स में आपको फायदा क्या मिलता है इस चीज का। Are you people listening to me? Yes, sir. Okay. यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज टेल मी। These things are little bit boring. मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये चीजें थोड़ी बोरिंग है, बट we have to do it. Okay.
चले एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने एक प्रॉपर्टी ले ली, if you have bought a property, for example a plot in 2010 and you are selling that plot in 2020 and you got let's say 3 lakh rupees or let's say 10 lakh rupees as a profit. So that profit will be called as capital gain. ठीक है? That profit will be called as capital gain. Now you have to pay that. Now you have to pay some tax on this capital gain or on your profit. So this will be called as capital gain tax. आप कुछ टैक्स देना पड़ेगा कैपिटल गेन के ऊपर. उस टैक्स को कहा जाता है कैपिटल गेन टैक्स. सिमिलरली अगर आप उसमें से लॉस करते हैं तो दिस विल बी कॉल्ड एज कैपिटल लॉस. अब फॉर एग्जांपल आपने जब 2010 में वो प्लॉट लिया था, उस टाइम आपकी करेंसी की परचेजिंग पावर कुछ और थी, और जब आपने 2020 में आपने सेल आउट किया और 10 लाख रुपीस उस पे प्रॉफिट किया. फॉर एग्जांपल आपने 50 लाख रुपीस का प्लॉट लिया था और आपने 60 लाख रुपीस का सेल आउट कर दिया. तो in the 2020 the value of your currency was reduced. It means that अगर आप 2020 में वो प्लॉट लेते, अगर आपने 2010 में वो प्लॉट लिया था 50 लाख रुपीस का लिया था, तो अगर आप 2020 में लेते तो वो हो सकता है आपको 55 लाख रुपीस का मिलता, बिकॉज 2020 में आपकी करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई है. तो आपको तो एक तरह से प्रॉफिट जो हुआ है वो 10 लाख रुपीस नहीं हुआ, आपको एक तरह से 5 लाख रुपीस प्रॉफिट हुआ है. ऐसा ही है ना? समझ आइए? अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन अगेन. यस सर. अगर किसी को नहीं समझ आई तो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा, क्योंकि आगे एक छोटा सा एग्जांपल भी है कैलकुलेशन में. ओके, आई थिंक सबको समझ आ गई. सो आपकी 2020 में वो करेंसी की वैल्यू डाउन हो चुकी थी. आपने एक तरह से 55 लाख रुपीस में वो प्लॉट लिया था और आपने 60 लाख रुपीस में बेचे, तो आपको 5 लाख रुपीस प्रॉफिट हुए. बट नजर तो ये आ रहा है कि आपने 50 लाख का लिया था और 60 लाख रुपए का बेचा, आपको 10 लाख रुपीस प्रॉफिट हुआ. अब आप को इनकम टैक्स लॉज जो है वो ये चीज अलाउ करते हैं कि आप 10 लाख रुपीस पर टैक्स नहीं देंगे, आप 5 लाख रुपीस पर जो है टैक्स देंगे. तो ये चीज आपको इनकम टैक्स लॉ अलाउ करता है. अब ये चीज कौन डिसाइड करेगा कि आपकी अगर आप ने 50 लाख रुपीस में वो प्लॉट लिया था 2010 एंड दिस इज नाउ 2020, तो अब आप अगर लेते तो ये कितने का मिलता आपको, तो ये चीज कौन डिसाइड करेगा? तो दिस कैन बी डिसाइडेड यूजिंग अ फैक्टर which is called as cost inflation index. This is notified by the government every year or even monthly as per the Pakistan Bureau of Statistics. तो ये फैक्टर आपको मंथली या ईयर वाइज आपको नोटिफाई होता है कि इन्फ्लेशन इंडेक्स इस मंथ का या इस ईयर का इतना है. तो उस बेस पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप अगर 2010 में आपने इतने का लिया था, तो अगर आप 2020 में ये प्लॉट लेते तो आपको कितने का पड़ता, और जितने का आपने सेल किया है तो वो फिर डिफरेंस जो उस अमाउंट में आता जो कि आपको प्रॉफिट होता, तो सिर्फ उस पे आप फिर टैक्स पे करते. तो फॉर एग्जांपल ऑन द 1st जनवरी ऑफ 2017 आपने 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर दिए, एंड इन
1 जनवरी 2018 आफ्टर 1 ईयर वो इन्वेस्टमेंट जो है 11 लाख रुपीस की हो गई है, मतलब उसमें वो इंक्रीज हो गई, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई एंड दैट इज नाउ 11 लाख रुपीस। तो आपका गेन कितना हुआ बिफोर इंडेक्सेशन? दिस इज 1 लाख। नजर तो ये आ रहा है कि आपने 1 लाख रुपी प्रॉफिट कर लिया। गेन बिफोर इंडेक्सेशन इज 1 लाख। Now inflation index during the financial year of investment was 210.94 and inflation index during the financial year of maturity, which is 1st January of 2018, the inflation index was 220.27. तो कितना परसेंट चेंज हुआ है इन्फ्लेशन इंडेक्स? इसका परसेंट चेंज आप कैलकुलेट कर लें, 220 माइनस 220.27 माइनस 210.94 डिवाइड बाय 220.27 into 100. This will give you 4.42%. Now, for you are allowed to increase the cost of your investment or the value of your investment by 4.42% due to reduction in the value of your currency. So your invested amount based on the inflation rate of 2018 is not 10 lakh rupees, but it is actually 10 lakhs and 44,200 rupees. Now the difference in the this invested amount and the maturity amount is 55,800 rupees. So you will not pay tax on 1 lakh rupee, but actually you will pay tax on the 55,800 rupees. Clear है सबको? Is it clear? मेरी आवाज आ रही है? Yes. अच्छा, ठीक है। अगर कोई इशू है तो प्लीज आप बता दें, कोई कंफ्यूजन है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। No, sir. Okay, then there is another terminology which is called as depreciation, and you'll discuss this or you'll study this in detail in the course of project economics or engineering economics, which will be in your 8th semester most probably. So what is depreciation? Let's say if you have bought an equipment for example, आपकी एक company है and you are owning a company and you bought an equipment for let's say 50 lakh rupees. Excavator ले लिया चले आपने, let's say the cost of new excavator is 50 lakh rupees. Now with time to time the value of that excavator will decrease because of the deterioration or wear and tear, या आपका मॉडल पुराना हो गया है जैसे कि गाड़ियों का, तो टाइम उसकी वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी, उसमें वेयर एंड टियर आता रहेगा। अगर आपने लेट से 50 लाख रुपीस का लिया तो आप 20 साल बाद बेचोगे तो it will not give you 50 lakh rupees, but it may give you 20 lakh rupees or 10 lakh rupees. तो ये चीज है। अब इसमें भी टैक्स को अगर देखा जाए तो अगर आपकी कंपनी
की वैल्यू देखी जाए कि आपके पास कितने इक्विपमेंट्स हैं, तो उस पे अगर आपका एक्सकेवेटर आपने 50 लाख रुपीस का लिया था, अगर आप और उसको 10 साल हो गए, तो आपको 50 लाख रुपीस के ऊपर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, बट एक्चुअली यू विल पे टैक्स ऑन द प्राइस which is the price जो उस ईयर में उसकी प्राइस बन रही है, उस हिसाब से आप उसके ऊपर टैक्स देंगे। अब ये चीज कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितने साल बाद किस चीज की कितनी डिप्रिसिएशन होती है? तो इसके लिए फॉर दिस पर्पस we are having 3 methods: straight line method, or sum of years digit method, or declining balance method. In this lecture we will discuss only the straight line method. The formula for the straight line method is dt, which is the change per year, and the change per year is equal to b minus s, and b is the initial cost of that item minus s, which is the salvage value. Which is the salvage value. अब salvage value क्या चीज है? EOL salvage value. EOL means end of life, and salvage value. जब अगर आपने एक प्रोडक्ट लिया है 50 लाख रुपीस का और उसका लाइफ स्पैन है 20 इयर्स, आप 20 साल तक वो प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। अब 20 साल यूज करने के बाद आप जब उसको सेल आउट करोगे, तो उस टाइम जो उसकी वैल्यू होगी, वो एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो उसकी सैलवेज वैल्यू होगी। तो अगर आपने 50 लाख रुपीस का लिया है और आप 20 साल बाद अगर आपको वो जब आप उसको सेल आउट करोगे, इट इज लेट्स से 20 लाख रुपीस इसकी सैलवेज वैल्यू है, तो दिस so you will use this 20 lakh rupees here in the s in the place of s. So b minus s divided by n. n is the number of years कि salvage value कितने years के बाद है, या आपकी उसकी लाइफ स्पैन कितना है उस इक्विपमेंट का, या उस ऑब्जेक्ट का, या उस प्रोडक्ट का लाइफ स्पैन कितना है, तो that will be n. So for example, an asset is costing you $900 and it has a useful life of 5 years. 5 साल उसकी useful life है, and its end of life salvage value is $70. So how much the value of this product will get reduced every year? So dt is equal to b minus s divided by n. 900, which was the initial cost, minus 70, which is the salvage value, divided by n, which is the number of years, which is 5. So it is saying that it is the value of the item or asset will reduce $166 each year. So year 0, it has costed you $900. First year depreciation was $166. So 900 minus 166. At the end of first year, the value of this item will be $734. At the end of second year, the 734 will come here, and you minus $166 for the second year, and you'll get 568. Then 568 will come here, and you'll minus $166, and this will give you $402, and so on. And at the end, you'll get $70 because the $70 is your salvage value. Total depreciation is $830. So it is called straight line method because the value of the item is reducing linearly. In the other methods, it is not linear. Initially it is slow, or initially it is faster, and then it is reducing. So rate is changing with time. So and the other methods are not linear.
Is there any question in the depreciation? No, sir. Okay. Then comes the sinking fund. Now, what is sinking fund? This is like for example, if you are owning a company and you have purchased an excavator for 50 lakh rupees, and it has a useful life of 10 years. So after 10 years, you have to buy again an excavator uh, for the same purpose. Now, it will be a good option that if you invest a constant amount in any bank regularly after each month, so that after 10 years, when the useful life is completed of that equipment, you have enough money to buy again that equipment. So how you can calculate the value of money which you will deposit in the bank account each and every month? So that is basically called as sinking fund. A fund or account in which a person or company deposits money on regular basis in order to repay some debt or other liability that will come due in the future. So this is the cash flow diagram. This is the 0 month, this is the first month, this is the second month, this is the third month, and these are the n months. This is the final outcome which you need, F. And A is the monthly installments which you have to give. So you have deposited in the first month some amount, the second month some amount, third month some amount, and at the end you can get the sufficient amount of money for buying that equipment. So this you can calculate this by using this formula. In this formula, this colored portion is basically called as sinking fund. So let's say the final amount you need is $1 lakh. ठीक है? आपको 10 साल बाद आपको $1 lakh चाहिए. You need $10 lakh. Sorry, not 10 years. You need $10 lakh at the end of 8 years. And the bank interest is, let's say, 7%. 7%. I is 7%. Find the value of A, which you will have to deposit each month in the bank account. So F is 1 lakh rupee, and A divided by, sorry, I is the interest rate, which is 7%. So you put here 0.07, and 1 plus 0.07 raised to power n. N is 8 years minus 1. So by this way you can get the $9,746. So you have to deposit $9,746 every month in this bank account. So after the end of 10th year, 8 years, you'll get 10 lakh rupees. $1 lakh. Is it clear? Yes, sir. Okay.
Then the next topic is about the valuation. Valuation is a process of determining the current worth of an asset or product or a company. And for example, आपने अगर 2005 में एक कंपनी खोली थी और आप 2020 में वो कंपनी सेल आउट करना चाह रहे हैं कि मैं आप वो कंपनी आपके लिए पैसे अर्न कर रही है और आप उस कंपनी को सेल आउट करना चाह रहे हैं, तो वो आप कितने रुपीस में सेल करेंगे? तो वो determining the value of that company or that any asset is basically called as valuation. Now, for determining the value of that company or any asset, there are different techniques. The first technique is asset-based. The second one is income-based, and the third one is market-based. In the asset-based technique, you will estimate the current value of that company by assuming that how much money or how much investment will be required to build up a company like this. ठीक है, आप ये कैलकुलेट करेंगे कि आपको 2020 में कितनी अमाउंट चाहिए ताकि आप इस तरह की एक कंपनी ओपन कर सकें या बिल्डअप कर सकें. This is something asset based. Now the second technique is income based. In this technique you'll determine in a way कि आपको कितनी, अगर आपने 2005 में कंपनी खोली थी और you want to sell it in 2020, so आप ये कैलकुलेट करेंगे कि आपको कितनी अमाउंट या कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए कि आप 2020 में एक ऐसी कंपनी स्टार्ट कर लें जो कि आपको इतनी इनकम मंथली जनरेट करके दे जो ये अभी करंटली ये कंपनी जनरेट कर रही है. So this is something income based valuation. And market based evaluation, so the market based evaluation is like you're surveying the market, and market में तो सेलिंग परचेजिंग चलती रहती है, तो आप अंदाजा लगा लेंगे कि मार्केट में ऐसी कंपनी की सेलिंग या परचेजिंग कितने में हो रही है. तो दिस इज समथिंग मार्केट बेस्ड वैल्यूएशन. Now coming towards the next and last topic, arbitration and litigation process. So what is arbitration and what is litigation? Any idea? Litigation तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था थोड़ा सा. किसी फर्म की लिटिगेशन हिस्ट्री है या नहीं है, वो हमने पाकिस्तान जेन्युइन काउंसिल का जो प्री क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है उसमें हमने डिस्कस किया था लिटिगेशन हिस्ट्री. Anyone know about the arbitration and litigation? No, sir. Okay. Litigation is something very formal and it is normally done in the court. आप जब अदालत चले जाते हैं किसी केस या किसी इशू पर, तो that is something litigation process. आप प्रॉपर वकील हायर करते हैं, you have to hire a lawyer and you have to gather the evidences, etc., and you have to pay the court fees, and the judge will give you the date, and then your case will be there will be hearing for your case, and then the decision will be
given. So this is something long and lengthy process, whereas the arbitration is in simple terms जो हम normally कहते हैं जिरगा. So this is like जिरगा, यहाँ पे फैसला जो है वो इनफॉर्मली और किया जाता है अदालत में जाए बगैर, और ना वकील को हायर करने की जरूरत होती है, ना जो है आपको, बस दोनों पार्टीज अपने मुत्तफिका तौर पे एक जो है आर्बिट्रेटर जिसे कहते हैं या फैसला करने वाला, उसको सेलेक्ट कर लेती हैं. वो दोनों की बातें सुनता है, वो जो फैसला करता है फिर वो उसी फैसले को दोनों पार्टीज को एक्सेप्ट करना होता है. So this is the difference between the arbitration process and litigation process. अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? Because in the civil engineering projects disputes आते रहते हैं, क्लाइंट का और कॉन्ट्रैक्टर का आपस में कि नहीं ये पेमेंट ऐसे होनी चाहिए, क्लाइंट कहता नहीं ये पेमेंट ऐसे होनी चाहिए. अब ये चीज जो है वो इशू बन गया है, तो वो दो ऑप्शन है, या तो कोर्ट में चले जाएं, या आपस में अगर कोर्ट में नहीं जाना चाहते, लंबा चौड़ा वो जो प्रोसेस है वो नहीं करना चाहते, और तो वो ये कर सकते हैं कि आपस में एक बंदे को मुंतखब कर लें जो जिसके ऊपर दोनों का ट्रस्ट हो, तो वो फिर जो फैसला करेगा वो उनको दोनों को एक्सेप्टेबल होगा. सो दिस इज आर्बिट्रेशन. رقم شو सर नेट लगा वाला ها ولا كسان روان دي يار نول وایو نو راشي زو तारिक ब्रेक है. हाँ सर नेट लाड़ वाला का. ما شابه بريك ندخو ساري لاड़ा पता नहीं वाले नेट कनेक्शन. अच्छा ठीक. تشير يا شابه دي خانشي تا کور مخته ویا.
بار بدرسم بيزا كده تصو يا चला गया है تو دري دار علم رضا सॉरी, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। ये आप प्लीज मुझे बता दें कहाँ पे डिस्कनेक्ट हुए थे हम। सर वो arbitration पे सॉरी। यहाँ कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस। सर पीछे सर से थोड़ा पीछे स्लाइड नंबर 22 है सर की ये डेफिनेशंस हमने डिस्कस किए आपने जब मैं डेफिनेशंस पढ़ रहा था कि ये नो सर अच्छा, मतलब ये काफी पहले से मैं डिस्कनेक्ट हुआ हूँ, आप लोग बताते हैं। स्लाइड सर इस स्लाइड से डिस्कनेक्ट हुए थे सर अच्छा, तो सीआर सर आप सीआर आप एक टेक्स्ट कर दिया करें जब डिस्कनेक्ट हो जाया करें, क्योंकि आई वाज थिंकिंग कि आई वाज अज्यूमिंग कि नेट कनेक्ट है और मैं काफी आगे तक चला गया था। ओके सर ओके, तो नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज आर्बिट्रेशन एंड लिटिगेशन प्रोसेस? एक फॉर्मल है और सर एक फॉर्मल है सर मतलब लिटिगेशन में हम फॉर्मली कोर्ट में जाते हैं और आर्बिट्रेशन में हम सर जिरगे की थ्रू फैसला करते हैं सर ठीक है, गुड। Okay, so this is the basic definition. Arbitration involves two parties in a dispute who agree to work with a disinterested third party in an attempt to resolve the dispute. वो जो थर्ड पार्टी है वो डिसइंटरेस्टेड होनी चाहिए, उसका मामले के साथ कोई इंटरेस्ट ना हो, उसका किसी एक साइड पे या किसी एक पार्टी में कोई इंटरेस्ट ना हो। Whereas litigation is a very old process that involves determination सियारो सर तमे से जो का सर नट गया लाड़ो खा पहले तो सियारा सर तमे से जो का शव
हेलो, आवाज आ रही? ये सर आ रही है। आई डोंट नो नेट को क्या हो गया है, कुछ कनेक्शन का इशू है। स्लाइड शेयर हुई, नेट स्क्रीन नजर आ रही है? Yes, sir. Okay. So after that, there is some discussion on the different advantages and disadvantages of this both processes. So till the last slide, these are the advantages and disadvantages. So the first aspect on which they are compared is the public-private and formality. So the litigation is not private, so it is an open discussion, and a court may expose all of the evidences. जबकि आर्बिट्रेशन में ये है कि थोड़ा बहुत आपस में ही आप और कोई नहीं होता और आप आपस में बैठ के डिसीजन हो जाता है। कोर्ट में आप जाते हैं तो सब बैठे होते हैं। दिस इज नॉट समथिंग प्राइवेट। Then if we talk about the speed of the process, then litigation is very lengthy process. It may take months or years. जज आपको हेयरिंग की डेट देगा, फिर वो आपकी हेयरिंग सुनेगा, एंड देन अगेन मे बी वो डेट दे दे। तो it may take months or years, whereas the arbitration process is very quick. If we talk about the cost of the process, so the litigation process will definitely cost you more as compared to the arbitration, because you have to pay the court fees, you have to pay the lawyer fees and other expenses. But in the case of arbitration, you may have only to pay the fees to arbitrator. वो भी अगर वो बगैर फीस की मान जाए तो वेल एंड गुड, क्योंकि मोस्टली आर्बिट्रेटर्स जो होते हैं वो फीस नहीं लेते। Selection of arbitrator and judge. So in case of the litigation, you have no option to select a particular judge or anything. You just have an option to select the judge or jury. जज जो है एक बंदा होता है और ज्यूरी जो है एक पैनल होता है, पूरा वो आपका केस सुनते हैं और फिर वो डिसीजन देते हैं, whereas the judge is a single person. और आर्बिट्रेशन के केस में you have open choice. आप दोनों पार्टीज जिस पे म्यूचुअली एग्रीड हो, आप उसको एज एन आर्बिट्रेटर सेलेक्ट कर सकते हैं। आर्बिट्रेशन प्रोसेस में आपको अटॉर्नीज की या लॉयर्स की जरूरत भी नहीं होती, जबकि आपका रिप्रेजेंटेटिव हो, जैसा कि कोर्ट में होता है। आप एक लॉयर हायर करते हैं जो आपका केस प्रेजेंट करता है वहां पर, एंड यू हैव टू पे द फीस ऑफ दैट लॉयर एज वेल। एविडेंस के बारे में बात की जाए तो the arbitration process has a limited evidence process, and the arbitrator panel or the arbitrator controls what evidence is allowed or what evidence is not allowed. Whereas in the litigation process, full disclosure of evidence to both parties is mandatory. तमाम सबूत जो है वो फिर publicly open किए जाते हैं। The rules of evidence do not apply in arbitration, so there is no interrogatories or no discovery process, etc. Availability of the appeal option, the last aspect of the comparison. So in the legal or litigation process or in the process of the court, if you are not satisfied with the decision of the
court, so you can appeal in the higher court, and then again, if you are not satisfied, you can again go to the Supreme Court as well. But this is not the case of the arbitration process. यहाँ पे बस जो arbitrator ने फैसला कर दिया है, अगर आप acceptable है तो ठीक है, otherwise आप समझते हैं कि the arbitrator was biased, तो वो दूसरी पार्टी की तरफ झुका हुआ था, तो वो फिर अगर आप satisfied नहीं है तो you can go to the court. There is no higher arbitration process or something like that. So by this we can conclude our today's lecture. If there is any question, you may ask, please. जी कोई क्वेश्चन नहीं है? जी No, sir. ओके, चलिए ठीक है. There are no questions, so then good luck for the exams, and we can end up this class. Thank you so much. Thank you, sir. सर का हेलो सर. जी जी. सर ये पेपर के बारे में जरा बताएं सर. पेपर जो होगा वो जेनेरिक होगा. जी सर. जेनेरिक मीन्स कि आपको टेक होम पेपर दिया जाएगा and you will be having some time to solve, and then you have to submit it in the within the given due deadline. और questions का मैं भी नहीं कह सकता कि कितने questions होंगे, क्योंकि I have not prepared the question paper. Hopefully 3 to 4 questions होंगे, and it might contain something report writing, something like report writing, or any description of the project, or explaining the different aspects of the project, or you can say it may be relevant to the PC1 or PC2. But the main point is it will be an open book exam, and it will be a generic in nature. Okay, another important thing, thanks for reminding. Last time ऐसा मैंने किया था कि जिनकी आंसर्स जो थे वो कॉपीड, ठीक है, उनको मैंने तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को 0 मार्क्स दिए थे उस क्वेश्चन में. तो इस बात का ख्याल रखें. आई नो आप लोग कॉपी नहीं कर रहे, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आप लोग जब खुद कर लेते हैं तो वो अपनी फाइल किसी फ्रेंड को गुडविल के साथ शेयर करते हैं कि चले आप उसके साथ उससे हेल्प ले लें, बट वो फाइल कहीं और पहुंच जाती है और वो सिर्फ और सिर्फ नेम चेंज करके वो फाइल अपलोड कर देते हैं. So if I found any file which is similar or which is almost same, तो both जिन्होंने वो फाइल सबमिट की होगी, जिसने वो सबको 0 मार्क्स मिलेंगे. एक्सक्यूज मी सर. जी सर ये जो आज असाइनमेंट है सर, इसकी सर जो PC1 फाइल है सर हमें नहीं मिल रही सर. तो सर अगर हम किसी से ले ले सर, उसे 2 बंदे असाइनमेंट कर ले, मतलब एक ही फाइल से 2 असाइनमेंट सर कर ले, तो सर उस पे कॉपीराइट होगा सर कि नहीं? आपको सर वो फाइल नहीं मिल रही?
सर PC1 फाइल सर नहीं मिल रहा है सर, किसी प्रोजेक्ट का सर नहीं मिल रहा है वो। ऐसे करें, जरूरी नहीं है कि किसी प्रोजेक्ट की आपको PC1 फाइल मिलेगी तभी आप करेंगे। आप कोई भी प्रोजेक्ट ले लें, फॉर एग्जांपल ऑरेंज लाइन ट्रेन हो गई, ठीक है, ऑरेंज लाइन ट्रेन सही। आपने प्रोजेक्ट ले लिया। अब आप इसका डाटा जो जो उसमें चाहिए वो अज्यूम करते जाएं। अब जरूरी नहीं है कि आप चीजें जो है वो एग्जैक्ट वही लिखें, चीजें आप अज्यूम करते जाएं और वो जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुल कर लें, तो फुलफिल करके वो एक रिपोर्ट्स या PC1 डॉक्यूमेंट सा बना लें, वो सबमिट करें। जरूरी नहीं है कि वो जो इंफॉर्मेशन आप सबमिट करें वो एग्जैक्टली उस प्रोजेक्ट की हो, क्योंकि वो डिफिकल्ट हो जाएगा और PC1 बनाना इतना आसान काम नहीं है। बस just I want you people to get familiar with the information which is required in the PC1 document. Is it clear? ओके ओके, थैंक यू सर। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।